Hello friend, welcome to Mechanics Tutorial. Today we are going to solve the another numerical on concurrent force system. Here, yesterday we solved the same type of numerical, but today the angles are not given. Instead of angle, the slopes are provided. So many students get confused in this type of numerical to finding the angles. It is very simple, बहुत आसान है. तो हम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ 200 न्यूटन फोर्स एंड 120 न्यूटन फोर्स बाय यूजिंग द ज्योमेट्री. नाउ सी हियर, सो दिस इज द स्लोप ऑफ 200 न्यूटन फोर्स इज प्रोवाइडेड. नाउ हियर वी आर यूजिंग द, लेट्स से कि एंगल फॉर दिस वन इज θ1 एंड फॉर दिस केस θ2. नाउ tan θ1 is nothing but what? Tan is nothing but what? Front side upon adjacent side. Front side upon adjacent side. So front side है आपकी 1 upon 2. Okay. Therefore, θ1 is equal to tan inverse of 1 by 2. Okay. And the value of θ1 on calculator we get 26.56 degree. Similarly for θ2. Now this θ1 is angle created with, always remember, हमेशा याद रखना है कि जो angle है that is created with denominator, that means with respect to x. This two line is parallel to x axis, so angle is with x axis. Now similarly we have to find out θ2. Okay, so θ2 is nothing but what? Tan inverse of 4 by 3. Tan inverse of 4 by 3, and the value of θ2 on calculator comes at 53.13. 53.13 degree. Okay, तो ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगेन डिनोमिनेटर के साथ रहता है, हमेशा आपको याद रखना है. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन आवर 4 स्टेप्स रेगुलर वे. ओके, सो फर्स्ट इज वी हैव टू रिजॉल्व ऑल द इंक्लाइन फोर्सेस, एंड वी नो दैट कि इंक्लाइन फोर्सेस रिजॉल्व करते वक्त आपको एंगल किस एक्सिस के साथ है वो ध्यान में लेना है. एंगल जिस एक्सिस के साथ है उसके साथ कॉस कंपोनेंट कैरी करता है, अदर साइड साइन जाता है हमेशा. That things or short tricks you have to remember while resolving the forces. Okay, so according to that we are resolving all the 4 forces. So first force is your what? 200 Newton. Now θ1, this angle is 26.56 degree, which is with x axis. That means the x component will carry the cos and y component will carry the sin. So this will becomes 200 cos θ1 and value of θ1 is 26.56. 26.56. Similarly, vertical component becomes 200 sin 26.56. Okay. Now for 120 also similar way, this θ2 is with x axis. Forget about its direction. एंगल जिसके साथ है वो देखना है, जिसके साथ एंगल है वो cos कंपोनेंट कैरी करता है हमेशा. तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट कैरीज द cos, which is nothing but what? 120 cos θ2. θ2 is nothing but what? 53.13. Okay, and the y component is 120 sin 53.13. Okay, now again for 500 Newton force, this 60 is again with x axis, 60 degree angle. ये जो है वो x axis के साथ है. So this component, horizontal component carry the cos and vertical component carry the sin. तो ये जो आएगा आपका, this is 500 cos 60. This is 500 sin 60. Okay. Now this 40 degree is with vertical line or y axis. So
vertical component of 100 Newton force will carry the cos and horizontal carry the sin. तो ये vertical component है, ये क्या आएगा आपका 100 cos 40, ये आएगा आपका 100 sin 40. Okay, so here most important thing is that in resolutions आपको ये याद रखना है कि एंगल किसके साथ दिया है, जिसके साथ एंगल है वो cos component कैरी करेगा irrespective of its position and direction. Okay, fine. So once we resolve all the forces, the resultant will get cancelled. Means इसका जो 200 का इफेक्ट है वही हमने इन दोनों में रिजॉल्व किया है. So this 200 Newton force effect get nullified. Similarly 120, 500 and this 100. Okay, तो आपके पास टोटल फोर्सेस जो भी आ रहे हैं वो सभी आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन में ही आएंगे. ओके, तो उसका रिजल्टेंट हमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगेन आवर रेगुलर वे द स्टेप 1 इज summation of horizontal forces that is nothing but what? Summation of f of x. And while calculating the f of x, again the universal thumb rule you have to remember: all the right side forces positive, all left side forces are negative. जनरल साइन कन्वेंशन हमें पता है, सभी की सभी राइट साइड फोर्सेस पॉजिटिव आते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं हम. सिमिलरली ऑल अपवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव, ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव. ये बात आपको याद रखना है, वेरी सिंपल. ओके, तो फॉर एफ ऑफ एक्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 200 न्यूटन फोर्स. तो ये अभी राइट साइड जा रहा है, इसके एरो के ऊपर फोकस करो, ये जा रहा है राइट साइड, तो ये आएगा आपका प्लस. ये 120 जो भी है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये आएगा आपका माइनस. सिमिलरली दिस 500 cos 60, ये अगेन लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये आएगा आपका माइनस. 100 साइन ये राइट साइड जा रहा है, तो ये आएगा आपका प्लस. ओके, सो summation of f of x is equal to 200 cos 26.56 माइनस लेफ्ट साइड जा रहा है, सो माइनस 120 cos 53.13. अगेन 500 इज गोइंग टुवर्ड लेफ्ट, सो माइनस 500 cos 60. And last force 100 sin, which is moving toward right, so that is positive. So plus 100 sin 40. Okay, now we have to make the calculations on calculator. It comes 178.89, 178.89. 120 cos 53.13, that value comes 72. 500 cos 60, value is 250. And 100 sin 40, that value is 64.27. Okay, that we have to make on calculator. Okay, check the calculations. The net component, horizontal component of resultant is minus 78.83, minus 78.83 unit is Newton. Okay, minus 78.83 Newton. This is the horizontal component of resultant force. Now step number 2 is summation of vertical component of forces. That is vertical forces, which is nothing but what? Summation of f of y. Now here you have to consider all the vertical forces only. Okay, all upward forces are positive, all downward forces are negative. Again, start from same force, that is 200 sin 26.56 upward to positive. Again 120 sin is upward, so that is also positive. So plus 120 sin 53.13. Okay,
Now 500 sin 60 is moving downward, so it is minus 500 sin 60, and last 100 cos 40 that is also moving downward, so वो भी आपका माइनस ही आएगा 100 cos 40. ओके, तो इसका कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर क्या रहा है? 200 sin 26.56 value is 89.42 plus 120 sin 53.13 value is 95.99 minus 500 sin 60 value is 433.01 minus 100 cos 60 100 cos 40 value is 76.60. तो इसका भी कंपोनेंट जो आ रहा है आपका दैट इज -324 न्यूटन. ओके, तो एफ ऑफ वाई कॉम्पोनेंट आ रहा है आपका -324, एफ ऑफ एक्स आ रहा है आपका -78.80. नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. सो थर्ड स्टेप इज योर व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ resultant force. That is R, and we know that R is equal to under root summation of f of x bracket square plus summation of f of y bracket square. आपने f of x कैलकुलेट किया है, f of y भी कैलकुलेट किया है. अगर उसका कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो, दैट फोर्स वैल्यू इज 333.64 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ R or magnitude of 3.64 Newton. Now we have to find out its direction, position of resultant. So step number 4 is direction of resultant force. And the formula for direction of resultant force, you know it very well. So resultant force is alpha equal to tan inverse of f of y, summation of f of y upon summation of f of x. That is nothing but what? Tan inverse of minus 324.20 divided by minus 78.83, and that value comes to near 76.33 degree. Okay, now its directions that we have to show. The direction here, resultant f of x is minus, f of x is your minus, that means toward left. Now f of y is also minus, that means it is downward. So ये डिपेंड कर रहा है आपके वैल्यू के ऊपर. f of x नेगेटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लेफ्टवर्ड. f of y is also negative, that's why it is downward. Now the resultant is always in between these two, so this will be the direction of resultant, that is R, and this is your alpha. So this way you have to show the position of resultant force. Thank you.